दुनिया एबे एमिति एक मोड़े छिड़ा होईची जेउठारे युद्ध केवल गोटे सीमार सीमित नाही। गोटे पटे ईरान अमेरिका युद्ध पई आज सारा विश्व चिंतित। विश्वर सबुठारु महत्वपूर्ण चोक पॉइंट मध्यरु अन्यतम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका एवं ईरान निज स्वार्थ पई बंद करी रखिछंती। अन्यपटे आज सकाळे दक्षिण चीन सागर रे चीन रो वाटर कैनन आक्रमण परे एशिया रे उत्तेजना चरम सीमारे पहुंची। किंतु आश्चर्यकर कथा हेउची एही घटना हजार हजार किलोमीटर दूर रे थिबा ईरान एवं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सह सीधा सड़क भावे जड़ित। किभଳି अमेरिका को दुईटी दिगरु घेरिबा पाई चीन एवं ईरान एकाठी होइछंती। आज रही स्वतंत्र रिपोर्ट रे देखंतु संपूर्ण विश्लेषण। आज सकाळे दक्षिण चीन सागर निकट रे चीन रो दादागिरी देखिबा मिलिछि। फिलिपींस चीन उपरे आरोप लगाइछि जे चीन कोस्ट गार्ड फिलिपींस रो जहाज को बारंबार धक्का देबा सह शक्तिशाली वाटर कैनन प्रयोग करिछि और फिलिपींस निकटवर्ती सागर रे विष मध्य मिसाउछि जहा फल रे मत्स्यजीव माने असुविधार सम्मुखीन हेउछथि बोली मध्य फिलिपींस आरोप लगाइछि। एही घटना परे अमेरिका तुरंत निजर कैरियर ग्रुप सही अंचल को पठाइछि। अमेरिका कहिछि जे फिलिपींस उपरे आक्रमण माने अमेरिका उपरे आक्रमण। किंतु एटी प्रश्न उठुछि मध्यप्राच्य विवाद मध्यरे चीन काहेकि आक्रमणात्मक होइछि। कोन चीन परोक्ष रे ईरान को सहाय्य करिबा पई ए सब उद्यम करूछि। विश्वर 20% तैल वाणिज्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देई हुए। ईरान धमक देइछि जे जदि अमेरिका तांकर तैल रप्तानी बंद करे तेबे से माने एही गुरुत्वपूर्ण जलपथ को बंद करि देबे। चीन हेउछि ईरान रो सबुठारु बड़ तैल ग्राहक। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुए तेबे चीन रो अर्थनीति पई एहा सबुठारु बड़ क्षति साब्यस्त हेबो। सेहिति पई चीन एबे दक्षिण चीन सागर रे उत्तेजना सृष्टि करी अमेरिकार ध्यान एवं सामरिक शक्ति को दुई भाग रे बांटिबाकू चेष्टा करूछि। अमेरिका पई एहा एक बड़ चैलेंज। ईरान को रोकिबा पई अमेरिका को निजर नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रे नियोजित करिबाकू पडुछि। अन्यपटे फिलिपींस एवं ताइवान को रक्षा करिबा पई अमेरिका को प्रशांत महासागर रे शक्तिशाली रहिबाकू हेबो। विशेषज्ञों मते चीन एवं ईरान मध्य एक गुप्त बुझामणा होईछि। जेतबळे अमेरिका ईरान उपरे चाप पकेइबो सेतबळे चीन दक्षिण चीन सागर रे उत्तेजना सृष्टि करिवो जहा द्वारा अमेरिका दुर्बल होई जिवो। भारत पई यह डबल डेंजर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हेबा द्वारा भारतर तैल बजार प्रभावित हेउछि। अन्यपटे दक्षिण चीन सागर रे युद्ध हेले भारत पूर्व देश गुड़िक सह वाणिज्य बंद होई जिवो। भारत एबे दुईटी युद्ध क्षेत्र मझिरे फसी रहिछि। दक्षिण चीन सागर रे एही विद्रोह कोन विश्व युद्धर निया को आहुरी भयभीत करिवो आ कोन चीन एवं ईरान एही जुगलबंदी विश्व को तृतीय विश्व युद्ध आडकू ठेली देबो। एही विषय रे अधिक आलोचना करबा पई आम सह फोन लाइन रे जोड़ी होइछन्ती विशिष्ट वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ विनोद मिश्र। तांका ठारू ए विषय रे अधिक जानिबा। सर आपन को न्यूज रूम को बहुत बहुत स्वागत। तो चाइना ए समय रे जो प्रकार करूचे साउथ चाइना सी रे एग्रेशन देखौची सेथुरा हमें कोन बुझी परिबा जे चाइना जानी सुनी दक्षिण चीन सागर रे उत्तेजना सृष्टि करूची कि जहा द्वारा अमेरिका ईरान एवं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रु निज ध्यान हटाई परिबो। नो रादर कुआ जाई पारे कि चाइना ए जो अमेरिकन फोकस ऑन ईरान ऊपर जो फोकस एटार गोटे एडवांटेज नवा पई चाहूची। जदि आपनर मने थिबो एई ऑपरेशन पई यूएसएस ट्रिपल जेटा कि जापान में थिला ए साउथ चाइना सी की अमेरिका रो सिक्योरिटी कवर विच रखुतला सेटा को वर्तमान नयसी डिप्लॉय कराई छी ए अरेबियन सी रे बा इंडियन ओशन में इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तेणु बर्तमान गोटे अमेरिकन वैक्यूम पावर वैक्यूम क्रिएट होइछि इन साउथ चाइना सी जहार एडवांटेज नवा पई चाइना चाहूछि। कारण एई जेमति गोटे पश्चिम एशिया रे ईरान एवं इजराइल गोटे विराट फॉल्ट लाइन से भली साउथ चाइना सी रे चाइना एवं ताइवान रो कन्फ्रंटेशन इज द हॉटेस्ट। ता छड़ा चाइना एंड ऑल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तांको से जो कंटेस्टेशंस रहिछि ऑन साउथ चाइना सी सेटा गोटे इशू। किंतु डायरेक्टली ताइवान को प्रोटेक्शन दिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर एन एग्रीमेंट डेटिंग बैक टू 1950 रिन्यूड इन 1981। तेणु से कमिटमेंट सब चाइना को प्रिवेंट कर और चाइना को दी थर भाविया बाध्य करे। जेतबेले भी चाइना जदिओ तांकर कॉन्स्टिट्यूशनल बा पॉलिटिकल
expressed mandate रही to assimilate Taiwan into China कारण से ताइवान एक्जिस्टेंस को मानती नहीं पॉलिटिकल एक्जिस्टेंस को मानती नहीं तेणु से बलपूर्वक भी दरकार पड़े मिसई देवार एजेंडा रही चाइना तेणु यहीटा जदि से एजेंडा को परस्यू कर चाइना कैन थिंक दिस इज द रियल अपॉर्चुनिटी बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इज बिजी एल्सवेयर और स्ट्रैंडेड एल्सवेयर तेणु इट माइट बी दैट तेणु खाली जे अमेरिका ध्यान हटेवा बिकज चाइना गल्फ ऑफ हॉर्मुज चाइना अमेरिका ध्यान हटेवा किसी करवा दरकार नहीं China can just put in a ship in Indian Ocean to drive shivers down Donald Trump's spine. I can imagine that this is an opportune moment. Beijing has thought, Beijing चिंता करी कि एटा गोटे टाइम जो टाइम रे Taiwan को easily can be captured. और सेटा जदि हुए, I can tell you that would be really close to a major war. It's not a third world war, but very closely approximating in intensity a third world war. तेणु आशा करा जाई पारे बा anxiously wait करा जाई पारे कि एटा कोवली मैनेवर चाइना is it a substantive maneuver to take on or gobble of Taiwan or it is just a threat. तो आम कहीपर सर जे चाइना यहाँ गोटे सुवर्ण सुजोग जे से मध्य प्राच्यर जो युद्धर फायदा नहीं साउथ चाइना सी रे जो निजर दबदबाटा बढ़ई पार सीधे मुझे कहली एत समय बिकज ताइवान को अमेरिकार सिक्यूरीटी प्रोटेक्शन रही चाइनार सब बड़ एजेंडा हूँ ताइवान को चाइना सहित मिसेवा तेणु यहाँ से प्रकोष्ठ समय भाई पारे जेहेतु अमेरिका जी की ताइवान को डायरेक्ट मिलिटरी प्रोटेक्शन दिए से बर्तमान एल्सवेयर मिलिटरी बिजी ता सहित रहा जे साउथ चाइना सी रे अन्य कंट्री मान सहित जो झमेला अच्छी चाइनार particularly with Japan, the CETA that will not be affected by this. Because Japan निजर capabilities have developed and there are ways the Japanese use to deter the Chinese aggression. CETA basically got a particular island को नहीं हुए, Paracel Island को नहीं हुए. किंतु अन्य there are many islands South China Sea रही दूटा को नहीं Philippines, Vietnam, इंडोनेशिया मलेशिया ये समस्त राष्ट्र सहित चाइनार इश्यू रही सर माने आमे कौन कहि परिबा जे जदि युद्धटा माने मध्य प्राच्यर जो युद्ध जोटा जदि आ मासे भी चली गला अमेरिका मासे भी आहुरी ईरान संगे फसिक रही गला तो चाइना कि छोटा बड़ एग्रेशन देखै परिबो कि ताइवान अगेंस्ट रे से तार किछि संकेत दउची ए सब एग्रेशन एबे साउथ चाइना सी रे करिके ए जो एग्रेसिव मैन्यूवर मु से तो ए इंप्लिकेशन टाणु it's not just a maneuver to distract America. Rather, it would taking advantage of the situation. Set up currently a long-drawn Chinese agenda. Taiwan को मिसेवा पाए. सीटे मुकोइले I differentiated Chinese aggression towards Taiwan and Chinese aggression towards other Southeast Asian countries. अन्य समस्त राष्ट्र जो तो चाइना झमेला रही but that is mainly taking regarding the territorial waters dispute जोटा कि गोटे काउ टंग क्लेम करे चाइना हॉर्स टंग कि एंटायर साउथ चाइना सी belongs to China. So there are international disputes, illegal disputes. किंतु Taiwan सहित China रो गोटे political issue रही they want to assimilate Taiwan into China because without that, the Chinese Communist Revolution of 1949 is incomplete because it has not spreaded into Taiwan, which still remains a democratic and a liberal territory. तो सर जो रूस चीन एवं ईरान मध्य जो सामरिक सहयोग रही तो सेटा आगामी दिन मानकर एशियार सुरक्षा व्यवस्था को क्यों भाई भाव में प्रभावित कर देखा गले तीन टाक ही देश कौन ना कौन प्रकार कन्फ्लिक्ट भितर जाऊँच फसुंच तो मैंने एशियार सुरक्षा व्यवस्था से हाथ में आगू केमती भाव में रही Don't forget to add India and Pakistan.
इंडिया एवं पाकिस्तान को इनक्लूड न कले एशिया व्यवस्था विषय कथबार्ता करा बिकॉज आपन जो तीन कंट्री कहले तब जो दीटा होचंदी एशियन कंट्री अनदर इज अ मिक्स और यूरोपियन कंट्री वन कैन से दैट इज रशिया रशिया चाइना एवं ईरान और नेक्सस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गोटे ड्र कर एक्सिस ऑफ इविल विल कोच इंडिया इज certainly not part of it. Pakistan one doesn't know. किंतु इंडिया एंड पाकिस्तान जो डायनामिक्स रही जोटा कि डिफाइन करुचे साउथ एशिया सिक्योरिटी सिनारियो को सिटी चाइनीज इंट्रूजन क्रिएट्स अनदर कॉम्प्लेक्स इट्स ए क्लासिक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू बारी बुजा एंड अमिताभ आचार्य so that is another complex. West Asian complex is a different complex जो कि इंडिया very limited role but no role in West Asia. And even China, the role is very, very minimal. In South Asia and Southeast Asia, there we see Chinese and Indian competition actually defines the security scenario. So, Asia re hame gote common security feature hame dekhiba pai paun. Asia being a vast continent, there are different region, different security features, right? At one level, at one region like West Asia, Bajako, Middle East, United States of America, critical equation is Iran-centric equation or Israel-centric equation. South Asian equation is India-centric equation. East Asian equation is China-centric equation. And competitions are there. In Southeast Asia, it is India-China competition. In Central Asia, it is China-Russia competition. India, intervening there. So, Asian security picture is very diverse. Obviously, upon you think that the relationship coupled with India-Pakistan dynamics, that will define Asia's security structure in the future. Obviously, we cannot rule out the largest military of the world or the most powerful country of the world, that is United States of America. तार रोल तो सब इम्पोर्टेंट रहा बट अपन जो प्रश्न था कि यही तीन टा एक्टर रोल में एशियन सिक्योरिटी केमी डिफाइंड हम माय आंसर इज नॉट ओनली दीज थ्री along with them India and Pakistan semanangar dynamics bilateral dynamics এবং semanangar regional dynamics that will define Asian security structure and जोटा कि monolithic हवा नहीं जोटा कि यूनिफॉर्म हवा नहीं थ्रू आउट एशिया